Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of University of Education, I Faiza Tariq welcome you all in the lecture number 31 of Computer Communication and Networks. Students, as we were studying about the network layer, in today's lecture or this week lectures, we will study about the TCP/IP network layer protocols, that is an IP. We will study the difference between an IP version 4 and IP version 6. We will see the features of IP version 4 and IP version 6 as well. Students, in our today's lecture, we will study about an internet protocol, and here we will see that what is an internet protocol position in the TCP/IP protocol suites. It is on the network layer where an IP address or simple an IP is a unique address that identifies a device on the internet or a local network. It allows a system to be recognized by other systems connected via the internet protocol. So there are two primary types of IP address um, format that we are using today. One is an IP version 4 and another one is an IP version 6. Here you can see that they are the internet protocols. The first one is ICMP, that is Internet Control Message Protocol, Address Resolution Protocol, that is ARP, Reverse Address Resolution Protocol, that is RAR, and IGMP, that is Internet Group Management Protocol. Students, what is the function of all these things? Here you can see that what is the need for network layer. The physical and data link layer operates locally and they operates with the MAC address, but the network address deals with the logical address. Logical address means that an IP address. It deals with logical address. If we want to exchange the data between networks, then they need to be connected to make an internetwork. So here this layer deals with the routers. If we don't have any network, if we don't have any network connection, if don't like an internet, then we cannot transfer data from one computer to another computer. So the low layers, they are the physical layer and the data link layer. They actually operates with the physical address. But the third layer, that is a network layer, it deals with the packets, and data travels in the form of packets over some router or over some internetwork device. At the network layer, we need to uniquely identify each device on the internet to allow global communication between all these devices. And how the global communication will perform? It will be performed through an internet. So इसमें routers यूज होते हैं, पैकेट्स यूज होते हैं. अब routers और पैकेट्स कैसे यूज होंगे? आपकी जो पैकेट है वो ट्रैवल करेगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू द राउटर्स. तो किस तरह से आप पैकेट को रूट करेंगे? थ्रू वन नेटवर्क टू अनदर, विच इज डन बाय यूजिंग एन आईपी एड्रेस. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर हमें एक नेटवर्क के अंदर डाटा एक कंप्यूटर से बी कंप्यूटर में भेजना है, देन वी डोंट नीड एन आईपी एड्रेस, वी जस्ट नीड अ मैक एड्रेस. लेकिन अगर हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डाटा को ट्रैवल करना है, डाटा को सेंड करना है, देन वी नीड एन आईपी एड्रेस. डाटा ट्रैवल करेगा अगर नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 पर, देन मैक एड्रेस हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, हमें एन आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड होता है. Students, today we will study a little bit about an IP version 4. What is an IP version 4? It is a network layer, layer 3 protocol, and which is documented in RFC 791. Students, RFC 791 is an internet protocol which is published in 1981, and it is an IP version 4.
protocol. It has two primary responsibilities, providing connectionless best effort delivery of datagrams through an internetwork, and it provides fragmentation and reassembling of datagrams to support data link with different maximum transmission unit sizes. Here you can see this is an IP datagram. It is an header which has length of 20 to 60 bytes, and a total length of an IP datagram is 20 to 600 bytes, in which 20 to 60 bytes are for the header and rest of the bytes are for the data. And this is the detail of an header. In header we have VER 4 bits, HLEN 4 bits, service types 8 bits, and total we have an length is of 16 bits. This is an IP datagram types of services field. What is a type of service? It is how the datagram should be used. For example, delay कितना है, precedence क्या है, उसकी reliability कितनी है, उसकी minimum cost कितनी है, उसकी throughput कितनी है. So ये जो type of services field है, they are now used by different services and is called by differentiated service code point, that is called the DSCP इसको हम बोलेंगे. और जो DSCP है ये हमें एक्चुअली हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ पे कि व्हाट इज द टोटल लेंथ इन नंबर ऑफ ऑक्टेट्स कितने हैं दैट इन द आईपी डाटाग्राम एंड इट टेक्स अप इंक्लूडिंग द हेडर. तो अब यहाँ पे हमारे पास लाइक हमें वी शुड हैव टू नो द टाइप ऑफ सर्विसेज. इफ वी हैव बाइनरी 0000 इट मींस इट इज अ डिफॉल्ट, एंड इफ वी 001 है तो ये कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है. 0010 इज मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी. 0100 मैक्सिमाइज करता है थ्रूपुट को, और 1000 मिनिमाइज करेगा डिले को, और 111 जो है वो मैक्सिमाइज करेगा सिक्योरिटी को. सो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्ट्रक्चर है ऑफ आईपी डाटाग्राम उसमें क्या है और उसमें कितने जो है वो उसके जो आईपी वर्जन में कितने नंबर्स बाइनरी नंबर्स जो है वो यूज हो रहे हैं. इफ द नंबर ये टोटल 4 नंबर्स हैं, 0100 000 100 111 ये सारे दे ऑल दीज आर द 4 numbers. Here you can see in MTU maximum length of maximum transmission unit. Maximum length कितनी है डाटा की that can be encapsulated in a frame. जैसा कि अभी आपको पता है कि नेटवर्क लेयर पैकेट के साथ डील करती है, उस पैकेट को हम फ्रेम बोलते हैं. उस पैकेट में एक या फ्रेम के अंदर एक आपके पास हेडर होता है, एक फोल्डर होता है, और सॉरी ट्रेलर होता है, और हेडर और ट्रेलर के बीच में आपका जो है वो डाटा यूनिट होगा, और उस डाटा यूनिट की कितनी मैक्सिमम लेंथ है वी शुड हैव टू नो दैट एज वेल. Encapsulation of a small datagram is an Ethernet frame. क्या होगा? There should be one header, there should be one trailer. Total length field define करता है कि total length of the datagram क्या है और including the header. और जो maximum transmission unit के अंदर जो डाटा की minimum length है that would be 46 bytes. आईपी डाटाग्राम प्रोटोकॉल फील्ड में अंदर आपके पास हेक्स वैल्यूज होंगी और डेसिमल वैल्यू 1 दैट इज इक्वल्स टू फॉर द ये आपके आईसीएमपी के लिए है that is OX01 and then OX02, OX04, OX06 and OX11 that is decimal value 1 equal to ये value 2 के equal है, this is equal to 4 and this is equals to 6 and this is equals to 17. 17 value. This is for the one. This value is for ICMP protocol. This is IGMP. This is IP tunnel के लिए है. This is for the TCP and this is for the UDP. So they are an IP datagram protocol fields. Here you can see in multiplexing, transport layer deals with the transmission control protocol and user datagram protocol, TCP or UDP, connectionless or connection oriented protocols. In network layers, your data field में जो आपके पास protocols होंगे, they are following ICMP, IGMP, EGP, OSPF, TCP and UDP.
EGP is Exterior Gateway Protocol. It is a protocol which is used for exchanging routing information between two neighbors gateway host, each with its own router. So in a network of autonomous system, EGP is commonly used between hosts on the internet to exchange the routing table information. And OSPF is an open shortest path first, an algorithm protocol, which is a routing protocol for internet protocol network, and it uses a link state routing algorithm and falls into the group of interior gateways protocol, that is IGPs. So operating within a single autonomous system, and it is defined as OSPF version 2 in RF 2328 in 1998 for an IP version 4. Students, we will discuss about an IP version 4 header fields. First, we will know that what is a header checksum, that is of 16 bits. As you know that IP version 4 addresses are written in the dot decimal notation, which comprises of 4 octets. आपके पास 4 octets होते हैं और हर octet जो है that is separated by a dot. Um, and it is expressed individually in decimal and separated by period. For instance, like you can say that 192.168.1.5 को अगर हम लें तो आपका जो साइज ऑफ हेडर होगा वो कितना था, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, दैट इज 20 to 60 बाइट्स आपका जो है दैट इज ऑफ द साइज ऑफ हेडर. तो इसमें आपको यू शुड हैव टू नो कि आपके हेडर की टाइप्स क्या है. आपके पास जो है वो 16 बिट का एक चेकसम होगा ऑन द हेडर ओनली. सिंस सम हेडर फील्ड्स चेंज time to live, for example, so this is a recomputed and verified to each points that the internet header is processed. What is a time to live? आपके पास 8 bits होंगी. This field indicates the maximum time. कितना उसने मतलब टाइम टू लिव का मतलब है कितनी उसकी लाइफ है. डाटाग्राम इज कितना मैक्सिमम टाइम डाटाग्राम को अलाउ है कि वो दैट रिमेन इन द इंटरनेट. सो इफ दिस फील्ड कंटेन्स द वैल्यू 0 then the datagram must be destroyed. So this field is modified in internet header processing. So TTL must be thought of only as an upper bound on the time a datagram may exist. So the intention is to cause undeliverable datagram to be discarded and to बाउंड द मैक्सिमम डाटाग्राम लाइफ टाइम. और ये बात RFC 791 में रेफरेंस की गई है. Here we will see some examples in which the first one is an IP packet has arrived with the first 8 bits as shown 01000010. A receiver discards the packet Q. Receiver ने Q इस packet को discard किया. We will see how. There is an error in this packet. Why? देखो जो आपकी leftmost bits थी they are 0100. That shows the version. वो आपके version को use कर show कर रहा है जो कि correct है. That is an IP version 4. Next 4 bits जो है वो header की length को show कर रही हैं, जिसका मतलब है कि 2 multiplied by 4 is equals to 8 आपके पास होना चाहिए था, which is wrong. So the minimum number of bytes in the header must be 20. आपको जैसे कि पता है कि हमारी जो header की minimum number है that is 20 to 6 मतलब total 20 to 60 bytes है. तो यहाँ पे आप कहते हो the packet has been corrupted in the transmission. Next question है कि if an IP packet the value of HLN is 1000 in binary. कहते हैं कि how many bytes of options are being carried by this packet. यहाँ पे HLN की value क्या थी, that is 8, which means the total number of bytes in the header is 8 multiplied by 4 that is equals to 32 bytes. अब first 20 bytes जो है वो तो main header है, next 12 bytes are the options. Question number 3 में देखें कि in an IP packet the value of HLN is 516 and the value of total length field जो है that is 002816. तो how many bytes of data are being carried by this packet?
In this question you can see कि आपके पास जो HLEN की value है that is 5, which means the total number of bytes of the header are 5 multiplied by 4 of 20 bytes. आपके पास कोई option नहीं है. Total length जो है वो 40 bytes है, जिसका मतलब है कि जो packet जो है that is carrying 20 bytes of data, that is from the 40 to 20. An IP packet has arrived with the first few hexadecimal digits as shown below. How many hops can this packet travels before being dropped? The data belong to what upper layer protocols? Here we will see to find the time to live field, we should skip 8 bytes, 16 hexadecimal digits है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि टाइम टू लिव फील्ड इज द 9th बाइट है, दैट इज अ 01. So this means the packet can travel only one hop. So protocol field is the next byte, that is 02. So which means the upper layer protocol is IGMP is used. That is a flag field. D means a do not fragment and M means a more fragments. Fragmentation example, here you can see that we have the 0000 bytes to 3999 bytes है. Offset आपके पास जो है that is 000. इसको हम 8 के साथ divide करेंगे which is equals to 0. अब यहाँ पे आपके पास जो है वो देखें कि कितने 3 इसके fragments हैं. First one is from 000 to 1399, again offset 0000 divided by 8, that is equals to 0. नेक्स्ट वन आपके पास जो है 1400 से स्टार्ट होता है, उसको हमने 8 से नंबर ऑफ बाइट से डिवाइड किया, दैट इज इक्वल्स टू 175. और उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमने किया 2800 को हमने डिवाइड किया 8 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 350. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि डिटेल्ड इसकी एग्जांपल क्या थी. आपके पास कितनी बाइट्स थी, 0000 से लेके 3999. दिस इज आवर ओरिजिनल जो है वो हमारा जो है वो डाटाग्राम है. पहले वाले में बाइट्स हमारे पास थी 0000 से लेके 1399. देन बाइट थी 1400 से लेके 2799. थर्ड फ्रेगमेंट था 2800 से 3999. अब इसकी जो डिटेल है ये आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास है 146,567. ये आपके पास इसमें हमारे पास टोटल जो था वो ऑफसेट कितना आया था, दैट इज 175. अब 1456 का जो है हमारे पास उसका जो ऑफसेट है दैट इज 175. ये कितना है, इसकी रेंज 1400 से लेके 200 जो है 199. ठीक है. उसके बाद हमारा दूसरे वाला आ जाता है, उसमें है ये तो 175 तक था. अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है दैट इज 14567 से लेके 275 तक. ठीक है. और इसका जो है वो कितनी बाइट्स हैं, 2200 से लेके 2799 तक. If the M bit is 0, it means there are no more fragments. The fragment is the last one. However, we cannot say if the original packet was fragmented or not. So a non-fragmented packet is considered the last fragment. अभी क्या बात हो रही है कि अगर m bit 0 है, इसका मतलब है कि हमें कोई no more fragments है. Fragment जो है that is considered to be the last one. However, we cannot say if the original packet was fragmented or not. So a no fragmented packet is considered the last fragment. Why? Because m bit is equals to 0. A packet has arrived with m bit value. अगर m bit की value 1 है, इसका मतलब है कि ये first fragment है, the last fragment और middle fragment कौन सा है. Do we know if the packet was fragmented? How? If m bit is 1, it means that there is at least one more fragments. So this fragment can be first one or middle one, but not the last one. Q? Because we don't know if it is the first one or a middle one, but we need more information, the value of the fragmentation offset. So however, we can definitely say the original packet has been fragmented because the m bit value is 1. A packet has arrived with an m bit value of 1 and a fragmentation offset value of 0. Is this the first fragment, the last fragment or a middle fragment? आपके ख्याल से ये first होगा कि last fragment होगा या middle fragment होगा?
होगा? बिकॉज m की वैल्यू 1 है, सो इट इज इधर द फर्स्ट फ्रेगमेंट और द मिडल वन. लास्ट अभी हमने पीछे देखा था कि ये नहीं होगा, बिकॉज द क्यों? क्योंकि ऑफसेट की वैल्यू 0 है, सो इट इज दैट्स व्हाई इट इज द फर्स्ट फ्रेगमेंट. A packet has arrived in which the offset value is 100. What is the number of the first byte? Do we know the number of the last byte? We'll see this question again. To find the number of the final byte, we multiplied the offset value by 8. So this means that the first byte number is 800. We cannot determine the number of the last byte unless we know the length of the data. जब तक हमें length of data नहीं पता होगा, we cannot measure the last byte. Next one, a packet has arrived in which the offset value is 100, the value of HLEN is 5, and the value of the total length field is 100. So what is the number of first bytes and the last byte? फर्स्ट बाइट नंबर क्या है 100, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 800. टोटल लेंथ जो है वो 100 बाइट्स है और हेडर की लेंथ क्या थी 20 बाइट्स थी, that is 5 multiplied by 4. So which means that there are 80 bytes in this datagram. यहाँ पे कितनी bytes होंगी? 8 5s are 40. So जो है वो 20 बाइट्स है, 20 को 20 बाइट्स मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 80 बाइट्स है. सो इफ द फर्स्ट बाइट नंबर इज 800, देन द लास्ट बाइट नंबर मस्ट बी 879. Students, in today's lecture, we have studied about little bit about an IP version 4 headers, and we have solved few questions. In the next lecture, we will study about an IP version 6. Thank you very much. Allah Hafiz.